डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005 में कवर्ड है और ये चैप्टर 2 के अंदर फॉल कर रही है. चैप्टर 2 कंटेन्स ओनली वन section and that is the definition of domestic violence. Domestic violence एक्ट की डेफिनेशन एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है जो इस एक्ट में प्रोवाइडेड है. हम उसको ब्रेक करके उसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को समझते हैं. नाउ domestic violence as provided under section 3 of the domestic violence act goes like when an aggrieved person has been subjected by the respondent through his act, omission, commission, conduct इन किसी भी तरीके से अगर उस अग्रीव्ड पर्सन को नंबर 1 कोई मेंटल फिजिकल हार्म होता है, उसकी लाइफ को एंडेंजर किया जाता है, उसके हेल्थ को भी एंडेंजर किया जाता है, लाइफ लिम, ठीक है, उसके ओवरऑल वेलबींग को भी एक फिजिकल और मेंटल, तो उस तरह का एक्ट, कंडक्ट, omission, commission will be covered under the Domestic Violence Act and include the physical and mental things. Also include any kind of physical abuse, sexual abuse, your verbal and emotional abuse and your economic abuse. Okay, now what are these things? It is explained under explanation 1 जिसको हम डील करेंगे. Second, if there is any kind of respondent's act, omission, conduct or commission which is causing any harassment or harm or injury to the aggrieved person, which is coercing her from an unlawful demand of a dowry, property or valuable security, that also amounts to the domestic violence. Or if the respondent is threatening the aggrieved person through his act, omission, conduct and commission, or any person who is related to the aggrieved person, be it any person, through and conduct cause any acts which is provided under clause A or clause B, that is mental, physical harm, injury, harassment, harm, injury to the aggrieved person, that also amounts to the. And lastly, if otherwise there is any harm or injury that is leading to any physical or mental harm to the aggrieved person, that is also covered under domestic. देखा कि there is a physical, sexual, verbal and emotional abuse and the economic abuse. What does it mean? It is provided under explanation 1. अब इसका मतलब ये है, the physical abuse means if by any act or conduct any bodily pain, any harm or danger is being caused to the life, limb or health of the aggrieved person, and it also include any assault, criminal force and or criminal intimidation. If such things are happening, then it will amount to the physical abuse under the definition of the Domestic Violence Act. ठीक है. Sexual abuse का मतलब है if there is any kind of act humiliates, which degrades and violates the dignity of a woman, will be covered under the sexual abuse. कोई भी इस तरह का humiliation, degradation, violation डिग्निटी ऑफ वुमेन की, तो सेक्सुअल अब्यूज़ का डायरेक्ट कनेक्शन डिग्निटी ऑफ वुमेन से रिलेटेड है. अगर उसको वो हार्म कर रहा है तो वो सेक्सुअल अब्यूज़ के श्रेणी में आएगा. फिर आ जाता है उस वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़. अब अगर आप इसमें कोई भी तरह का इंसल्ट, यू आर रिडिक्यूलिंग, यू आर ह्यूमिलिएटिंग बाय कॉलिंग सम नेम, और for not having a male child, you're abusing a person. क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इंडियन सेटअप में मेल चाइल्ड को लेकर भी काफ़ी ताने कसे जाते हैं एक बहू पर, ठीक है, तो वो भी इस पर्टिकुलर वर्बल इमोशनल अब्यूज़ में कवर्ड होएगी, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की एक्ट की डेफिनेशन में फॉल करेगी. एंड इफ देयर इज़ अ थ्रेट
to cause any physical pain to you, I'm threatening you to cause a physical pain to you, then it will be also covered under the verbal emotional abuse. So फिर से देखते हैं, अगर किसी तरह का insult, ridicule या humiliation हो रहा है in the form of name calling, or to not having a male child, you are insulting or you're ridiculing a person, and repeated threats are given to cause any kind of physical pain to you or to any person with whom the aggrieved person is related, will be covered under the Domestic Violence Act. Now, what is economical abuse? Economical abuse को भी हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. 1, when you are depriving a person of the economic and financial resources such as स्त्रीधन, और उन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं एक विमेन के ऊपर उन सब चीज़ों का राइट है, और वो इंक्लूड करता है क्या क्या, स्त्रीधन हो गई, कोई प्रॉपर्टी हो गई जो जॉइंटली आप ओन करते हैं बीइंग अ रिस्पोंडेंट एंड द अग्रीव पर्सन, या फिर आप अग्रीव पर्सन उसको एक सेपरेटली ओन कर रही है, ठीक है, वो चीज़, या फिर किसी तरह की प्रॉपर्टी में आप कुछ रेंट मिल रहा है वो चीज़, या आपको मेंटेनेंस. अगर आप इन सब से किसी को डिप्राइव कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिकल अब्यूज़ कर रहे हैं, और वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में कवर हो जाएगा. उसके बाद इफ़ यू आर बीइंग अ रिस्पोंडेंट इज डिस्पोजिंग और यू आर एलिनेटिंग एनी काइंड ऑफ, यू आर डिस्पोजिंग द हाउसहोल्ड इफेक्ट्स, कोई भी हाउसहोल्ड इफेक्ट्स आप उसको डिस्पोज कर रहे हैं या एलिनेट कर रहे हैं किसको, असेट्स को, ठीक है, बी इट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, या किसी वैल्यूएबल्स को या शेयर्स को या सिक्योरिटी को या बॉन्ड को जो कहीं ना कहीं अग्रीव्ड पर्सन को चाहिए और शी हैज़ द राइट और दैट इज़ नीडेड फॉर हर सर्वाइवल, एंड यू आर डिप्राइविंग हर और यू आर डिस्पोजिंग दैट इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिकल अब्यूज़. या फिर आप प्रोहिबिट कर रहे हैं या रिस्ट्रेन कर रहे हैं एक्सेस को टू रिसोर्सेज, फैसिलिटी which the aggrieved person is entitled to use. For example, you are living in a shared household and you are not allowing a woman to use the washroom, to use the toilet. So that is, you are not, you are restricting the particular person the access to use a resource or facility which the aggrieved person is entitled to use and entitled to enjoy. Okay, so that would also amount to the economic abuse. That means you are somewhere depriving a person, you are disposing some of the property, or you are prohibiting or restricting that person to an access to a asset which she is liable, having the right to use. Now, with this is all domestic. Now, एक और चीज़ कवर होती है. There is an explanation too जो बात करता है कि any act, omission, commission or conduct of the respondent will constitute the domestic violence if we consider the overall facts and circumstances of the case that shall be taken into consideration. Yani, to determine the domestic violence, any act, omission or commission or conduct of the respondent will constitute a domestic violence if we consider the overall facts and circumstances of the case and it appears us to be a domestic violence. ये बोल सकते हैं कि domestic violence की जो definition है वो exhaustive definition नहीं provide कर रखी section 3 में. It is an inexhaustive definition and it depends on a case-to-case basis that what will amount to the domestic violence and the different circumstances that is provided under a particular act.